Greetings, everyone. I am Dr. Divansha, a dental surgeon and oral cancer screenist. I am also the co founder of Whiteboard Education and Research Foundation. Today, I have the honor of hosting this session and introducing our esteemed guest. We have with us Dr. Shubhadeep Day, a neurology specialist at Max Hospital with extensive experience in the field. Additionally, we are joined by Dr. Rohit Upadhyay, the Chief Medical Officer of the Emergency Department at Asian Hospital, Faridabad, who has also worked with Apollo and Fortis hospitals. I'm thankful for the wonderful audience today for this discussion on World Health. Special thanks to Ms. Shivangi for her hard work in organizing this event. So, once again, welcome everyone on our webinar platform on this auspicious occasion of World Health Day, organized by Whiteboard Education and Research Foundation. Together, let us celebrate the importance of health, well being, and strive to make a positive impact in the lives of individuals around the world. Thank you for being a part of this meaningful event. Once again, a warm welcome from the Whiteboard team and our audience. Let's start. So today we have our guest of honor, Dr. Shubhadeep Day and Dr. Rohit Upadhyay. What we are celebrating today? We are celebrating World Health Day. So actually, आज के दिन हम क्या celebrate कर रहे हैं? We are celebrating the foundation day of WHO, 76th anniversary of World Health Organization. So the target for today is that we want to create a awareness among us, among our audience. People are lacking a gap between their healthcare and the normal life we are living. So, starting with myself, being a dentist, what all problem I faced. Being the dentist, what all struggle, what all obstacle I faced. Before that, I will like you to introduce, I will like you, please, Dr. Shubhadeep Day, I'll like you to introduce yourself, brief about you. Handing over to you. I guess I'm audible. Yes, ma'am, you are. Please brief something about you. Hello. Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? Yeah, you're audible. I can see you too. Hello, ma'am. Dr. Shubhadeep this side from Max Hospital, Vaishali. It's a pleasure to me to meet these sessions. Hello. Yeah, I can see you. I Okay. can see you too. I can hear you too. Yeah, healthcare awareness. Yeah, camping. It's a nice topic for the discussions for nowadays. Yes. So, Shubhadeep, I'll hand over to Dr. Rohit Upadhyay to brief about himself. Sir, I'm Okay. handing over to you. Please brief about yourself and introduce yourself a bit. Thank you, man. Thank you so much. Thank you for the warm wishes. I would like to thank all the panel members and team members out here. A very good evening to all of Good on evening. this auspicious occasion of World Health Day. As you told very nicely, WHO was founded 76 years ago on this 7th April. Also, I would like to add, national health missions were also started on the same day of 7th. So, this concept of health is not only being disease free. I think it's altogether concise in, I mean, mental as well as physical health. So Yeah, it is correct. important. It's important to be healthy. As we say, health is wealth. If a person is rich, but he is diseased or he's debilitated with some kind of illnesses, wealth doesn't create much of impact on his life. So altogether, I would like to say nutrition, diet, exercise, mental health, and physical health, when it goes hand in hand, then we can consider good or healthy individual. As we have recovered from a very big pandemic, COVID. Yes. So now every disease process has changed. People are becoming, uh, I would like to say that people are being conscious on their diets and everything, what to wear, what not to wear, where to go, where not to go. Uh, in the era of
being so busy all the time, people are have lacking in their mental health, especially. So, Dr. Shubhadeep, you there, right? Are you hear me? Yeah, Can you hear me? Yeah. yeah. मैं चाहूंगी आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं. What kind of struggle you faced that you have not ended up choosing the MBBS branch and you ended up doing a physiotherapist? क्या आपने पहले से ये सोच रखा था that you want to be a physiotherapist, or you ended up how you ended up doing physiotherapy, and how what kind of obstacle you faced during your like courses during the patient you like I must say like being a dentist I have faced a lot patient problem लोगों की opinion कि care नहीं है, people don't know about dentistry much, they have lots of gap, they don't know कि dental health care कितना important है आपके normal health के लिए भी. सो लाइक दैट आई गेस आपने भी काफी प्रॉब्लम फेस किए होंगे. सो मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा सा जर्नी अपना बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल यू फेस्ड एंड कैसा रहा बीइंग लाइक पूरा जर्नी ड्यूरिंग योर कोर्सेज ड्यूरिंग योर एजुकेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट यू लाइक फेस्ड. मैम देखिए, बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट, बेसिकली मैंने भी एमबीबीएस के ट्राई किया था पहले, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं था. फिर मैंने फिजियोथेरेपी ज्वाइन किया था. हाँ, तो मैंने पहले बैचलर किया, फिर मास्टर डिग्री मैंने पास आउट हुआ न्यूरोलॉजी साइंस में. मेरा जो जर्नी है उसमें बीच में कोविड पैंडेमिक है, तो हम लोग कोविड में भी हम लोगों ने काफी अपने रोल निभाया था आईसीयू में बेसिकली. और जो आईसीयू में बेसिकली जो पेशेंट थे कोविड की, उसका चेस्ट कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा था. तो हम लोग उनको चेस्ट फिजियोथेरेपी सेक्शनिंग करके उसको रिकवरी करते थे. उसके साथ हम लोग उनको मोबिलाइजेशन करना, एक्सरसाइज सिखाना, ये सब कुछ करते थे. पहले फिजियोथेरेपी का इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था, बट अभी अवेयरनेस काफी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि अभी लोगों को पता है कि फिजियोथेरेपी होता क्या है. पहले कोई भी मतलब पेशेंट के साथ कि बस ये लोग थोड़ा हाथ पैर चलाते हैं और फिर मसाज वगैरह कराते हैं, बट अभी का जो सिचुएशन है वो ऐसे नहीं है. हम लोग को जो न्यूरो रिहैब सेटअप मैक्स वैशाली में है, उसमें प्रॉपर रोबोटिक्स वगैरह पे हम लोग काम करते हैं. या फिर रोबोटिक्स भी है, साइबर टाइन जो न्यू है, ट्रांसक्रिनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जो ब्रेन हेमरेज के बाद हम लोग करते हैं बेसिकली. और हेल्थ अवेयरनेस कैंपिंग हम लोग भी करते हैं, मतलब मैक्स स्पेशली खुद ही इसको लिया है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं और काफी सारे बुजुर्ग लोग जो घुटने की दर्द लेके आते हैं, शोल्डर की पेन लेके आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को लेके आता है. हम लोग उसको सारे असेस करके फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. और ये फिजियोथेरेपी जो है ये हम लोग आईसीयू में भी करते हैं, ओपीडी में करते हैं, आईपीडी भी करते हैं, और बाहर जो होम केयर कंटिन्यूएशन उसमें भी करते हैं. तो फिजियोथेरेपी अभी जो मेडिकल साइंस में बोलूंगा कि डॉक्टर के 60% के बाद ये 40% कम हम लोग के मैक्सिमम होते हैं. करेक्ट. चलिए थैंक यू. मूविंग ऑन टू डॉक्टर रोहित उपाध्याय, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी आपकी जर्नी कैसी रही ड्यूरिंग योर एजुकेशन ड्यूरिंग योर लाइफ लॉन्ग पेशेंट्स जितने भी आपके पास आए, व्हाट काइंड ऑफ इमरजेंसी पेशेंट यू फेस्ड, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल ऑब्स्टिकल यू फेस्ड ड्यूरिंग योर जर्नी, आप प्लीज बताएं थोड़ा. Good question, ma'am. Actually, when I started studying, it was in 2012. So I went to Bombay to study MBBS. So I think वहाँ पर coastal regions हैं, so I think the prevalent communicable diseases are very much, Very So, much, yeah. so because the temperature and the weather is not favorable for everybody, so people get a lot of skin infections as well. Being a busy city in Bombay, a lot of crime also involved. Yes, correct. So salts, accidents, all these things are very common in emergency department, especially. So after that, after graduating from there, I went to Pune. I have done child health in Pune. So for 1 year I was in Pune. Afterwards, I joined Apollo. For 2 years, I was in Apollo Hospitals in the Department of Pediatrics. So yes, especially in pediatrics, if we talk, mental health wala concept is very, very diverse. Kids Mm. nowadays, due to
I mean, the progress in technologies and phones and TVs, बच्चों में ज्यादातर देखा जाता है कि उनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो काफी हद तक कम। काफी हद तक इम्पैक्ट हो रहा है nowadays. और फिजिकल हेल्थ भी कहूंगा क्योंकि बच्चे अब पार्क नहीं जाते, खेलते नहीं हैं, ये एक्सरसाइज नहीं करते, या मोस्ट काफी बच्चे सबकॉन्शियस माइंड्स में इतना स्ट्रेस लेके बैठे हैं कि 10th के एग्जाम है, 8th के एग्जाम है, ऑल दीज थिंग्स, ऊपर से पेरेंटल प्रेशर, ये करना है, ये नहीं करना है, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग वेरी पर्टिकुलरली इन किड्स। ये बच्चों में ये चीजें ज्यादा है अभी के मुकाबले। उसके बाद में वहां से जब पढ़ाई वगैरह खत्म हुई तो 2019 में 19 में पेंडेमिक आ Hmm. गया। डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी, आई मीन आप लोग सोच सकते हैं क्या हालत होती होगी जब लोग Yes, sir. सिलेंडर लेके We have faced तो we have faced it. सो वो चीज तो बहुत हाई लेवल पर जाकर, and it was very bad to see such kind of environment also, and you are sometimes you feel helpless, क्या करें हम, but still जो भी accessible था, जो भी आदमी के हाथ में था, वो सबने अपनी तरफ से किया है। I'm very Yes. sure you have always also have done contributed a lot to it. Yeah, yeah, yeah. We have done. We have worked night and day Yes, shift. Like yes, we yes, have worked in yes. government clinics, in government hospitals. Uh, yeah, people are dying on roads without Dr. Rohit, I oxygen. would like to, sorry to interrupt. I'd like to ask Correct. you, how much pandemic, like, what do you think this COVID and this pandemic has affected the human health? Like, मेरे पूछने का मतलब ये है कि हेल्थ काफी टाइम पहले when the COVID was not there, उस टाइम पे भी लोग काफी बीमार होते थे. It was a issue. There was not any kind of कि ऐसा कोई बीमार नहीं हो रहा है या लोगों में प्रॉब्लम्स नहीं है. But गेटिंग अफेक्टेड विद कोविड कोरोना वायरस लोगों की इम्यून सिस्टम लोगों का कैपेसिटी Right. ऑफ वर्किंग थिंकिंग पीपल आर सेइंग कि हमें टायर्डनेस ज्यादा हो जाती है वी कांट सिट फॉर लॉन्ग टाइम वीकनेस काफी ज्यादा है these vaccines like people are facing lots of I have heard ki youth generation they are facing a lot of heart attack issue minor stroke because of the covid vaccines and all आप इस पे कुछ बताएं अगर you have I think कोविड ने जो एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट किया है मासेस में, जनरेशंस में और लोगों के अंदर, वो एक चीज है, वो इम्पैक्ट जाएगा नहीं। आफ्टर दिस आई वुड लाइक टू ऐड एक्चुअली द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, दैट्स इस पे जो इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट काफी ही ज्यादा स्कैरी है, काफी ज्यादा बड़ा है। नोबडी इज एबल टू फॉरगेट, जो लोग आईसीयू में रहे हो या कोविड में उनका ट्रीटमेंट चला हो, दे आर नॉट रेडी टू फॉरगेट एनीथिंग, मतलब वो पास बाय होता है रोज उनके सामने। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि steroids, the use of steroids in COVID yes made a bad it's a impact major factor. in term of diabetes. People are getting diabetes because of that. People are getting uncontrolled sugar, severe strokes, heart attacks and all. So ये चीज तो इम्पैक्टफुल थी और अभी भी रहेंगी। नाउ आफ्टर कोविड आई वुड लाइक टू से कि अभी चीजें और बैक्टीरियाज, वायरसेस जो भी हैं, ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंट हो चुके हैं दवाइयों से, इतना नॉर्मली ट्रीटेबल नहीं है पहले जैसा। एक Correct. एंटीबायोटिक खाया और ठीक हो गए, अभी वैसा नहीं है। लॉट ऑफ रेजिस्टेंस has been created, especially in antibiotics. Disease process has modified itself so well. Half of the medicines are not working, which were useful earlier. So Okay. yes, combat किया, लेकिन हाँ, here we are now. जब ठीक है। Yeah, we hope for the best. Yeah. So next, moving up to Dr. Shubhadeep Day, I will like to ask you कि आप हमें ये बताइए how much sedentary lifestyle like ये जो आज की डिजिटल लाइफस्टाइल है ये sedentary lifestyle people are quick getting everything in minute यार नीचे नहीं जाना है we can order it we don't want to walk सन रे हमें रात में बाहर नहीं निकलना है हमें दिन में बाहर नहीं निकलना है sedentary lifestyle हो गया है artificial oxygen artificial air you are getting at your home so what about these things what do you want to say about these things please tell us few points क्योंकि बेसिकली ना मतलब क्या हुआ ना मतलब लोगों को जितना ज्यादा कंफर्ट कंफर्ट जोन मिल गया ना,
तो लोग अपने एक्टिविटी भी कम कर दिए है ना। करेक्ट। ये फर्स्ट है। तो मेरे मानना है कि ये 30 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, कोई भी 3 मिनट्स को, है ना, करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं ऑर्गेनाइज सक्सेस कराने के लिए, कि आप लोग जब मतलब करते हो, कोई डेस्क जॉब करते हो कंप्यूटर में ना, एक ही जगह पे आप लोग सिटिंग करते हो, ठीक है ना, घंटे पे घंटे। तो उसके बाद जो पेश वहाँ पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आते हैं हम लोग का, कि उनको मतलब चक्कर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, नेक नेक पेन हो रहा है, हाथ में पेन रेडिएट हो रहा है, तो हम लोग इसके लिए काफी ज्यादा एक्सरसाइज भी प्लान करते हैं, ठीक है। और अभी का ना लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं, तो मुझे लगता है जिम कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप उसमें वेट ट्रेनिंग वगैरह करते हो। मुझे लगता है इससे अच्छा कि अगर आप 30 मिनट्स कोई एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह करते हो, स्विमिंग हो जाए, साइकिलिंग हो जाए, वॉकिंग हो जाए, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है। सेकेंड है कि हम लोग जो जंक फूड वगैरह सबसे ज्यादा खाते हैं अभी के लाइफ स्टाइल में, वो कम करना चाहिए, ठीक है। थर्ड है कि हम लोग को ये सोडियम इंटेक भी कम होना चाहिए शरीर में, क्योंकि इसमें आपको रिस्क ऑफ हार्ट अटैक भी काफी ज्यादा कर देते हैं, कर ठीक देते है। और फोर्थ है कि मतलब स्ट्रेस लेवल भी हम लोग को काफी कम होना चाहिए, स्ट्रेस में भी काफी ज्यादा बैड इफेक्ट भी पड़ते हैं। हैं। और एक चीज है कि कोविड के बाद लोगों ने मतलब सीखे तो है कुछ, क्योंकि हैंड हाइजीन पहले लोग करते नहीं थे, अभी लोग हैंड हाइजीन भी करते हैं। पहले लोग मास्क नहीं पहनते थे, अभी लोग मास्क पहनते हैं, ठीक है ना। मतलब कोविड एक तरह से खराब भी किया है और अच्छा भी किया यस, डू एंड डाई, नेसेसरी एविल। गुड वन। सो आप मुझे ये बताइए, कई बार मैंने ये फेस किया है कि आई हैव हर्ड अ लॉट पीपल वर्किंग इन आईटी सेक्टर, राइट, दे आर सिटिंग फॉर सो लॉन्ग टाइम, बहुत देर देर तक वो कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हैं, वो बैठे रहते हैं, ऑल द टाइम दे आर वर्किंग ऑन फोन, वर्किंग ऑन लैपटॉप स्क्रीन्स, and you know it's not about for 1 hour or 2 hours, they are continue working for 8 hours, and I guess it matters a lot for your eye also and for your sitting posture also, like you're not sitting straight, आप एक comfort zone में बैठते हो and then you work generally। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि prostate cancer in males, I have heard I have read a article, people were saying कि जो IT प्रोफेशनल हैं उसमें प्रोस्टेट कैंसर की जो रेट है वो काफी ज्यादा आ रही है। Reason being, wearing a tight clothes and sitting for a long time, it affects your like hormones, it affects your sitting positions, postures, and your many things. मैंने बहुत स्टडीज में पढ़ा है ये चीज, तो आप प्लीज ये बताइए कि how they can avoid it, मतलब क्या कर सकते हैं, because see they need to work, it's their profession, they need to work, like what can the measures they can take to avoid as much as they can, कि ठीक है now we will try this, we will take this preventive measures so that थोड़ा हम safe side रहें। देखिए बेसिकली ना जो आईटी, मैं आपको ही बता रहा था कि हम लोग क्लासेस भी लेते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, इवेंट्स कंपनी में जाके Yes. जाके सिटिंग पोस्चर कैसे होना चाहिए, ठीक है ना, कंप्यूटर की हाइट कैसे होना चाहिए, आप जब बैठते हो तो आपके हैंड की हाइट कैसे होना चाहिए, टेबल का फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, मतलब इसको आर्गोनॉमिक्स भी बोलते हैं, आर्गोनॉमिक्स, ठीक है। तो Okay. हम लोग इससे मॉडिफिकेशन भी करते हैं कि कैसे होना चाहिए, आपको कैसे काम करना है। और घंटों भर जो आईटी लोग काम करते हैं एक ही जगह पे बैठ के, उसके लिए आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो एक एक 2 घंटे बाद, तो स्टिचिंग भी कर सकते हो अपने हैंड्स को, अपने नेक को, ठीक है। उसके लिए एक अलग क्लास होना चाहिए, मतलब हम लोग लेते हैं, तो हम लोग Yes. अभी ऐसे ही आपको बता नहीं पाएंगे, हाँ, ठीक है। मंथली चेकअप Also, कराना also, चाहिए, also, I would आई like गेस। to add. Also, I would like to add, obesity is the biggest challenge in IT professionals. यस। And also, जैसे आपने कहा टाइट क्लोथिंग एंड ऑल, तो उसको हम थोड़ा सा रिलैक्स क्लोथिंग कर सकते हैं, करेक्ट। along with the sitting posture and ergonomics. That would be helpful. Helpful. Thank you, Dr. Shubhadeep. Moving on to Dr. Rohit. I would like to ask you, please tell me about healthcare accessibility and equity. क्या आप ऐसा फेस करते हैं बीइंग अ इमरजेंसी डॉक्टर? आई गेस आपने बहुत तरीके के पेशेंट, मतलब उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से लेके, उनके कंडीशन से लेके और उनकी इक्विटी भी, कि हर बंदा जो उसका बेसिक राइट है
health is your basic right. But as we all know, we have a great population, so इतना तो we all know कि हम वो face नहीं कर पा रहे हैं and हम नहीं दे पा रहे हैं अपना 100%. बट आई विल लाइक टू आस्क यू कि सर क्या बोलना चाहेंगे आप इस चीज पे कि देन मतलब क्या लगता है आपको हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी मतलब कितना सक्सेसफुल है इंडिया में? हेल्थ केयर एक्सेसिबल तो है, बट अफोर्डेबल नहीं है। Most of the people in India who are living at a very normal wage, daily wages वाले जो लोग हैं, they are scared to go to bigger hospitals. गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब जानते हैं क्या काम करते हैं। वहां जाने से ही वो आपको कमरे नंबर 4 में चले जाइए, कमरे नंबर 8 में चले जाइए, वहां चले जाइए, उसी में हो जाता है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स लोग जाने से इसलिए चार्जेस ऐसे हैं ऐसे हैं कि शायद। अगर एक नॉर्मल आदमी से अगर बोला जाए कि मुझे हेडेक हो रहा है, से बोले एक एमआरआई करा लो आप, वो ऐसे ही नहीं कराएगा, उसकी 2 महीने की सैलरी चली जाएगी वहां। सही इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स नाउ। हाँ, इमरजेंसी में सब आते हैं, फिर करेंगे क्या कुछ, चाहे कहीं से भी मैनिपुलेट करें, उन्हें करना पड़ेगा, फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचता उनके पास। सो आई वुड रियली थिंक कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट को इस चीजों में थोड़ा सा इनिशिएशन करना चाहिए। नाउ वी हैव सीन दिल्ली में थोड़ा बेटर हो गया पहले। दिस इज अ when you are trying to cater to masses of people, then it is a bigger initiative and requires a lot of uh, wealth as well, money as well, planning as well. So I think किसी इंडिविजुअल के करने से नहीं होगा। करने से नहीं होगा, करेक्ट। So I think government or the bigger what do you say in charges of DMs, IAs, जो भी लोग पोजीशंस पे हैं, जिनके हाथ में मिनिस्ट्रीज हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, वुमेन, जो भी, उन लोगों को इसके लिए थोड़ा अ, पूरे रूप से निरीक्षण करना चाहिए, चेक करना चाहिए, देखना चाहिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लोग रेफर होकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं, क्योंकि वहां पर वो ऑलरेडी 5-7 दिन काट चुके हैं, कुछ होता नहीं है। नो टेस्ट, वो बोल देंगे दिल्ली चले जाओ, वो बोल देंगे एम्स चले जाओ, वो बोल देंगे सफदरजंग चले जाओ। इट इज हैरेसिंग, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत हैरेसिंग। डॉक्टर रोहित, मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। व्हेन आई वाज डूइंग माय रोटरी इंटर्नशिप इन डेंटिस्ट्री, राइट, I have seen, because my college was a government college, right? So in that place, I was doing it in Bangalore, and that to a very village, isolated area. So जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आती थी, वो फार्मर बैकग्राउंड था, उनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था। तो मैंने ये फेस किया था कि चलिए ठीक है, एक्सेसिबिलिटी दे हैव, ओके, दे कैन कम, दे कैन द, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, कैन यू प्लीज क्योर इट, दे बेगिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑल्सो, एंड वी आर लाइक ठीक है, हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं वी विल डू। यू नो व्हाट आई फेल्ट, इक्वलिटी की जहां बात आती है, आई टेल यू वन थिंग, कि पीपल कम, व्हेन अ नॉर्मल पीपल हु इज सफरिंग फ्रॉम फॉर अ टेक, आप लेके चलो कि एक बंदा है आपके पास, देयर इज अ पेशेंट जो सफर कर रहा है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से, दैट इज अ प्री कैंसरस स्टेज, ओके। सो नाउ अगर वो नॉर्मल पेशेंट आपके पास एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, तो यू डू ऑल द प्रोसीजर्स, ठीक है, आप रूम नंबर 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए, वॉट एवर द प्रोसीजर यू नीड टू फॉलो। सेम टाइम आई हैव फेस्ड, किसी के रिलेटिव आए हैं, किसी डॉक्टर के अप्रोच से आए हैं, तो उनको हमें ये कहा जाता था कि डॉक्टर दिवांशु प्लीज टेक केयर अबाउट दिस, ठीक है, इवन द सिचुएशन इज नॉट दैट ग्रेट। तो बीइंग अ जूनियर रेसिडेंट, मेरे पास कोई राइट नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊं, बट आई फेल्ट अ लॉट कि अ पर्सन हु इज एट द स्टेज ऑफ डाइंग एंड हु डोंट हैव एनी लाइक सपोर्ट, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग, एंड वही एक आपका अप्रोच और ये चीज आ रहा है, तो आप काफी कंसर्न हो उस चीज को लेके। तो एग्जैक्टली, आई ये वाज लाइक, वीआईपी कल्चर है। वीआईपी या मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, बीइंग इन एजेंसी आपने काफी फेस किया होगा ये चीज a कि, lot of times this happens. People who are politicians who have wealth, who have money, वो कहीं भी जा सकते हैं, बट नहीं, उनको आना है, सूट चाहिए, उनको सूट वाला कमरा चाहिए, उनको प्रॉपर, उनको मेडिकल असिस्टेंट चाहिए 24 घंटे। और ये तो सिर्फ नॉर्मल बात है जो आसपास के लोग होंगे इनके लिए। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जो बड़े लेवल पर जो लोग हैं, वो इंडिया में ट्रीटमेंट कराएंगे ही नहीं।
करेक्ट। अगर एक नॉर्मल आदमी एक टूथ एक जैसे आपने बोला सबम्यूसिव फाइब्रोसिस लिपोप लेके आए लेकिन कुछ भी लेके आए डजंट मैटर अनटिल अनलेस यू हैव द पावर टू मैनिपुलेट द सिस्टम वो आने से पहले बता के आएंगे कि हम आ रहे हैं और हमारे लिए ये अरेंजमेंट चाहिए और ऐसा चाहिए और ऐसा चाहिए करेक्ट। You said need to be correct. Health is a right, as you said. Basic ये संविधान में मैं लिखा हुआ है. हाँ, ये बट ये अगेन इसी चीज पे आ जाती है बात कि एक बंदा ये चीज सही नहीं कर सकता है, एक डॉक्टर ये चीज सही नहीं कर सकता है, एक नर्स ये चीज सही नहीं कर सकती है। इट टेक्स अ टीम एफर्ट्स एंड वेरी हायर ऑथोरिटी आल्सो। Right. बट ठीक है, एज वी हैव प्लेस्ड आवर पेशेंट इज आवर पेशेंट, विल ट्रीट विद इक्वालिटी। Right. Coming to Dr. Shubhadeep Day, can you hear me? Yes, ma'am. Tell me something, some good thing about Max Hospital. Like वहाँ पे आपने भी जरूर फेस किया होगा कि हाई स्टैंडर्ड्स, बहुत पेशेंट फ्लो के बारे में बताइए। व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट यू हैव फेस्ड कि इमरजेंसी में, या फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत आपको ऐसा लगा हो, वर्थ वाइल हो, लाइक दैट। मैम देखिए एक्चुअली ना मैक्स में जो भी पेशेंट्स आते हैं वो 80% को रीच होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे रूम रेंट वगैरह डॉक्टर चार्जेस ठीक है प्रोसीड्यूर चार्जेस काफी हाई है। अगर मैं गवर्नमेंट से तो मैं इसको कंपेयर कर ही नहीं सकता। आसपास के जो हॉस्पिटल्स है कॉर्पोरेट उससे भी काफी हाई है। बट हाँ यहाँ पे एक जनरल वार्ड भी है इकोनॉमिकल जनरल वार्ड भी है और उसमें इतना भी रहता है कि आपको वेटिंग मिलना पड़ेगा ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो पेशेंट्स आते हैं उसका टीपीए वगैरह होते हैं या आपकी कैश पेशेंट होते हैं। अच्छा। जो पैनल वाला पेशेंट जो होता है डीएचए सीरीज उस पेशेंट्स का बहुत कम है वहाँ पे मौका। तभी भी वैशाली में तो है बट बाकी साकेत और पटपरगंज इसमें पैनल अभी है ही नहीं कि उन लोगों को ये लगता है कि जो ऑब्वियसली कैश और टीपीए में उनको फायदा ज्यादा है ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं काफी डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर पेशेंट्स भी आते हैं। वो लोग भी क्या करें क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स भी काफी अच्छे हैं। तो डॉक्टर रोहित ने जो बोला कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खराब है 4 नंबर पे जाओ 8 नंबर पे जाओ बट मैक्स में ऐसे नहीं। मैक्स में आपको प्रॉपर पाथवे मिल जाते हैं कि वहाँ पे गाइडेंस सबको मिल जाते हैं। आप जब भी एडमिशन होते हो तभी आपको एक फ्लोर मैनेजर मिल जाता है जो आपको प्रॉपर गाइड कर देते हैं कि आपको ऐसे 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 जाना है ठीक है। तो इस हॉस्पिटल में तो मैम हेल्थ काफी कॉस्ट है सो चेकअप भी आप करो। एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी पे ये बोलना चाहेंगे कि एक्सेसिबिलिटी तो है बट इक्वलिटी नहीं है। वी हैव टू फेस चैलेंज। सो डॉक्टर शुभदीप, मुझे ये बताइए, हाउ मच क्लाइमेट चेंजेस एंड हाउ मच एयर pollution being living in Delhi and Delhi and NCR, how much it affects to our health? मुझे like the main topic, people are facing a lots of problem in Delhi, population and pollution both. So please tell me regarding it something. मैम देखिए इसमें ना बेसिकली दिल्ली का तो पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन जो है वो इंडेक्स से काफी हाई है। तो हम लोग पॉल्यूशन तो बीइंग ए हेल्थ केयर कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो मिनिस्ट्री लेवल की बात है कि उन लोग को कुछ करना है तभी पॉल्यूशन कम हो सकता है। Correct, बट correct. बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम लोग पेशेंट को ये अवेयरनेस देते हैं कि आप लोग मास्क पहनिए जब भी आप बाहर जाते हो। सेकेंडली आप एक्सरसाइज हाफ एन आवर डेली करो। इसमें आप ट्रेडमिल कर लो थोड़ा चेस्ट की एक्सरसाइज करो ठीक है थोड़ा वॉकिंग करो। सेकेंड थर्ड है कि आप हेल्दी फूड वगैरह लो बाहर की जंक फूड्स वगैरह मत लो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब ज्यादा खाओ। आपने आपकी जो मिल्क है जो है उसमें आप ज्यादा करो ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर शुभदीप, बट मैं यहाँ एक चीज पूछना चाहूंगी। क्या है कि जो नाउ डेज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ऑल्सो दे ऑल आर, जैसा आप जानते हैं कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स दे आर यूजिंग अलॉट राइट नाउ। ग्रेप्स न्यूज इज गोइंग ऑन हिट कि लोग को ग्रेप्स खाने से कैंसर हो रहा है बिकॉज दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड पीपल वे आर रियली अफ्रेड कि हाउ वी विल लाइक नो नीड टू परचेज ग्रेप्स एनी मोर, वी डोंट वांट टू ईट। सो ये भी एक रीजन हो जाता है कि बहुत आर्टिफिशियल लाइफ हो गई है। मतलब क्या खाएं क्या नहीं खाएं, व्हाट इज अ प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज ऑल्सो। जहां तक मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिम से ज्यादा व्हाट यू विल प्रिफर, योगा और जिम, क्या करना चाहिए हमें?
मैम Both. जिम तो बेसिकली नहीं है, मैंने आपको ये बोल रहा हूँ कि योगा आप कर सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, और एक्सरसाइज कर सकते हो 30 मिनट मिनिमम। इसमें आप साइकिलिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। नाउअडेज लोगों में ये चीज भी हो गया ना, नाउ वी ऑल आर लाइक वी आर सो बिजी कि हम वो एक जो टाइम था जब हम गेम्स स्पोर्ट्स बहुत खेला करते थे, एंड डू यू थिंक इट इज लैकिंग नाउअडेज जनरेशन टू जनरेशन? हाँ जी मैम, वो है क्योंकि इसलिए अभी ना एक्चुअली प्रेशर इतना ज्यादा है बच्चे के ऊपर कि उन लोग को मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, जैसे पहले होता था कि पहले ग्राउंड भी बहुत ज्यादा था, अभी तो इतना अर्बनाइजेशन हो चुका है कि ग्राउंड भी नहीं मिलते, सिलेक्टिव ग्राउंड ही होते हैं। उसके ऊपर से वो प्रेशर इतना ज्यादा है बच्चों के ऊपर कि उन लोग को टाइम ही नहीं मिलता, तो वो लोग अभी घर बैठ के जो भी गेमिंग वगैरह वही खेल लेते हैं। ये तो है लखनऊ में। Thank you, Doctor. Dr. Shubhadeep, thank you so much. Moving up to Dr. Rohit. Can you hear me? Yeah. I'd like you to ask ki, what kind of challenges our new generation, like our new Gen Zs, are facing nowadays in healthcare? Like how healthcare are important to them because the generation is too fast, too furious too. So what kind of problem they are going to face and they are facing? See, ma'am, basically what I think in this man is there are two types of major problems children are going to face in near future. First is related to their eyesight and neurological issues. That is for sure. Screen time has gone up significantly. As Dr. Suvadeep has said, grounds नहीं है. Then flat cultures. सारे बच्चे फ्लैट में रहेंगे. There are no grounds. कहाँ जाएंगे एक रूम से बालकनी, बालकनी से रूम. तो आई साइट्स वाला और मेंटल ग्रोथ वाला पॉइंट, वो जब बाहर जाते थे बच्चे तो चार बच्चों से मिलते थे, खेलते थे, नई नई बातें होती थी. That is gone. That is not anymore a part of their. Other thing is because everyone is so study oriented कह लें या career oriented कह लें. Now when we used to study there were only 4 5 subjects in school: English, Hindi, maths and science. हाँ, Now French has come, or some yoga has come, some music has come. उसके हाँ. बाद बच्चे वहां से आएंगे, फिर ट्यूशन जाएंगे, उस कोचिंग जाएंगे. तो इतना ज्यादा बर्डन है उनके ऊपर. You won't understand. And look at the census now. If a child studies for 25 years, then also he's struggling to get paid 25,000 after 25 years. Yeah, correct. Or not only like I like to tell you कि being a dentist, I have seen my friends, my colleagues, even like they have faced a lot of problem after studying for 6 5 years and then doing extra internship, doing good. They are facing a lot क्योंकि लोगों में एक gap तो है. They don't people are aware of much things. तो हमें ऐसा लगता है कि इसीलिए पब्लिक हेल्थ जो है वो कॉन्सेप्ट में आई कि विल कैंपेन, विल डू सोशल वर्क, हम लोगों में कैंपिंग करके बताएंगे, हम सोशल सोशल वर्क करेंगे ताकि उनको ये अवेयरनेस हो, रेस के थ्रू, डेंटल कैंप्स के थ्रू, नॉर्मल रूटीन स्क्रीनिंग एंड चेकअप के थ्रू. बट स्टिल आई विल टेल यू कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आज भी लोग ऐसे हैं कि इट्स अ स्मॉल पेन, जस्ट अ टूथिंग, हाउ डज दैट मैटर अ लॉट, लेट इट बी, विल डू इट, विल गेट गो फॉर चेक लेटर ऑन Yes, हम जाएंगे दिखाने, we'll check it later, and then when it's then that is the major reason you are ending up losing your natural teeth and you're going for implants, and then you're coming back after 50 years ki hi mere to I don't have any teeth anymore and I have lots of issues and all. तो ये चीज तो मैंने भी नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस तो है. इंडिया के लोगों में काफी ज्यादा हेल्थ को लेकर नेग्लिजेंस है. दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ट्रुथ. अरे ठीक है, हो जाएगा, बाद में देखेंगे. Until unless it comes as an emergency, nobody's bothered. no, yes. So, Dr. Rohit, I like to ask you the most important thing, that is sleep deprivation. Like people nowadays living earning lakhs rupees a month or you say crore a year, but they are not sleeping properly. They are taking pills and they are sleeping at night. And people who are living in village and गांव में जो मतलब बंदा, the person who is not earning even 25K a month, they are sleeping like king. Uh, so
I'd like you to please tell something about sleep deprivation and sleep dyspnea people are facing a lot nowadays. Even there are two things in this particular aspect. One is subconscious mind में stress, anxiety जो भी चलता रहता back of the mind लोगों को. One thing is that before going to bed, everybody, including me, you, I think everybody is using phone all the time. Yes, yes, true, true. So it's a major thing because when your retina and your cornea is exposed to blue lights for a longer period of time, you're not, your body is not ready to sleep at that moment. So good sound sleep of 7 to 8 hours, depending upon the lifestyle the person has. Has. 7 to 10 hours of sleep is recommended. Nowadays, That I too think good sleep. Sorry to interrupt, but that too sleep. good and sound sleep. Um, Good and sound sleep, including all the stages of sleep. It has to be the 3 hours of non-REM sleep is always important. Most of the people are not able to achieve that stage initially. Now I've seen. In fact, I'll talk about my father. He has OSA, so oh, so he's using his machines to sleep. You can relate how difficult it is to sleep with a bigger mask on your face all the time, pushing air into your lungs. yes, correct. So sleep is definitely very important thing, uh, which is going for a toss nowadays. People are always continuously on their phones, WhatsApp, earning this much, dealing with business deals, office jobs. Yes, not they're not thinking about where to sleep, how to sleep. Do you think there's a phone radiation, even your phone is in sleeping mode, or you have just switched it off and kept near your bed on your side table? So it does it radiate any radiation or magnetic radiation or resonance, something which is impacting our eye, mental health or something? No, it was not nowadays. Earlier phones, which were using some other frequency of bands, जैसे रेडियो में भी frequency होती है, तो Yes. फोन की भी एक proper frequency और wavelength होती है. Earlier phone when it was around 2G वाला जो समय था, उस समय पर ये चीजें थी थोड़ी बहुत. आज के दिनों में उनकी वेवलेंथ हटा दी गई है एंड देयर आर नो स्टडी टू प्रूव कि ये कार्सिनोजेनिक है और रेडिएशंस निकल रही हैं. नथिंग लाइक. What kind of preventive measure we can take it to avoid this screen time? Please tell me because this is the highest concern I'm facing. Everybody is asking me the same thing. Do we need to keep our phone away from the bedroom or not? See, what I think about this is the first thing is internet. Oh, correct. फोन हम लोग जब भी यूज करते हैं 90% ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग इंटरनेट. True. सो आई थिंक इंटरनेट इज द प्रॉब्लम नॉट द फोन. सो पीपल अभी कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. किसी को कोई पेंटाप्रोजोल नाम की दवाई के बारे में जानना है तो फोन खोल लेगा. Google. कोई न्यूज पढ़नी है तो फोन खोल लेगा. सोशल मीडियाज तो है ही. सो आई थिंक पीपल हैव लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन बुक्स. दे रेफर News. टू इंटरनेट न्यूज़पेपर एंड दे रेफर टू इंटरनेट टू द सेम थिंग. इंटरनेट तो लिखा ही होगा. Believe me, everything written on internet, especially the medical part, is not right. Not right. The patient come and say, "Ki sir, you have given me this medicine, and I have searched on the internet. It says you can have nausea or headache." So I, not personally, I don't mean to hurt anybody, but I definitely tell them go scroll downwards, comma और death भी लिखा हो. Don't Correct. use it too much. I mean, let it be. ये हमारा पार्ट है, हम कर लेंगे. All People, correct. patients, आप कंसल्टेंसी लेने नहीं आते, देने आते हैं. Huh. They are very smart nowadays. Very. So it is not always right what you study, especially the medical part on internet. It is written in very brief, दो लाइनें लिख दी और you don't know what is it. Okay, thank you, Dr. Rohit. Moving up to Dr. Shubhadeep Day, I want to ask you, tell me something about malnutrition. How much do you face that nutrition deficiency you have seen in your patient?
Like you went for a physiotherapy and you're giving them exercise or something, but you're facing the people are so lean, they are lack of nutrition, malnutrited people. How much malnutrition and nutrition deficiency affecting the normal human health? हम देखिए दूसरे ना अभी मतलब जो घर के खाना होता है वो भी लोग कम खाते हैं, है ना? बाहर के खाना पिज़्ज़ा, बर्गर सब खाते हैं लोग, ठीक है? Yes. और इन सब के लिए जो भी मतलब डोमिनोज़ पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग भी करते हैं, लोग जाते भी हैं बाहर खाना खाने, तो उसमें उनका कोई न्यूट्रिशन चीज़ तो है नहीं, ठीक है ना? Correct. और बाकी जो मतलब जो खाना होना चाहिए, जिसको प्रॉपर डाइट बोलते हैं, वो लोग अभी बहुत कम लेते हैं। जैसे फ्रूट्स होना चाहिए, ठीक है? लो फाइबर डाइट होना चाहिए, वो अभी लोग लेते नहीं हैं। बट हाँ, फिजियो में ये है कि मतलब हम लोग बेसिकली जो malnutrition वाला पेशेंट को डील नहीं करते, ठीक Correct. है? वो तो मतलब जो भी पेशेंट है उसको अगर बहुत लीन है तो वो मतलब वैसे ही आता है पेशेंट, कोई malnutrition पेशेंट वैसे आते नहीं है। बट हाँ, बेसिकली जो फूड की जो कमियां हैं, जो न्यूट्रिशनल फूड लोग लेते नहीं है उसी वजह से। होता है. So, a diet plan में what kind of changes you would you like to do, like breakfast to dinner? Like लोगों में ये पता होना चाहिए. Like we all know कि breakfast हमेशा heavy होना चाहिए. Moving on to lunch, it should be between these time, and then dinner should be always very light. So I would like to ask you कि किस तरीके का एक normal diet, not some fancy oatmeal or something, एक normal diet जो लोग कर सके, affordable भी हो और they can do it also and they can follow it also. ये बेसिकली ना मैम जैसे हम लोग जब बीएमआई मेजर करते हैं बॉडी मास इंडेक्स में हाइट Yes. और वेट जो होता है उससे मेजर भी होता है, ठीक है ना? तो हम लोग उसी वजह से कैलोरी को सेट करते हैं कि हम लोग कितना केसीएल लेना पड़ता है, ठीक है ना? तो हाँ, ये है कि मॉर्निंग का जो डाइट होना चाहिए वो सबसे ज्यादा हेवी होना चाहिए, दोपहर का उससे कम और रात को एकदम ही कम। क्योंकि रात हाँ कभी कभार ये भी लोग करते हैं कि लोग रात को उन्होंने उन्होंने बहुत ज्यादा खाया और बिल्कुल सो गए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स बाद उनको सोना चाहिए खाना खाने के बाद। Correct. डिनर Yes. That is a thing I do understand. I guess we have. Okay, so hi everyone, this is Dinesh. I'm one of the board member in Whiteboard Foundation. Oh, hi Divyansha, how are you? I'm doing good. What about you? Good, good. Hello Dr. Rohit. Hello Dr. Sudeep. I hope you guys are doing good. I'm really thankful that you guys joined this session. So we have a couple of questions in the chat box, and there are some funny questions also. To be very honest, to all three of you. So the first question is from Mr. There is one guy, Saurabh. Okay, so he asked, "Hi, ma'am." So Devansha, I think this question is for you only. So how would you advise a friend who wants to quit smoking but is struggling from with cravings? Uh, This, this is all in your mind, Saurabh. It's always the willpower, and I better know कि जब इंसान ये सोच लेता है मुझे मूवी देखने जाना है एंड मैं जाके रहूंगा, तो इंसान अगर ये सोच ले कि मुझे क्विट करना है तो वो क्विट करके रहेगा. So it's all your willpower and your mind. So don't tell me about cravings. Cravings तो इंसान को बहुत चीजों की होती है, but you need to control. And it will you will come to know when you'll suffer a lot. So before that, quit it as soon as possible. Don't give me this reason again, okay? That I'm craving for it. People crave for a lot of things, but they don't do. Right? You need to. It's all in your mind. You need to mentally very strong. Ki nahi, I want to quit it. I will quit it at any cost. Like that's the way good. you want to party and you do party, right? Okay. So any further advices from Dr. Rohit or Dr. Sudeep about this, like how his friend can quit the smoking? So nothing, as ma'am very rightly said, it's just the willpower. There are many things, there are many replacement for sweets or thing, but in the end, it is the willpower and your mind will play the most important role in this. I agree with Any advice from Dr. Sudeep? You might have सेम something ही है, new. माइंड माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा। So I hope, like Saurabh, you can advise your friend and you can advise yourself also. I know that this might be your question. Okay. So there is one more question. The person name is Akash. He is asking, what are the changes you have seen and advised to the public after COVID?
That's a very good question, I think so. Yes, it's a good question. I like Doctor, both of the doctors to please reply, give your point of Yes. view on. Starting from Dr. Rohan. Yeah, please, sir. Yeah. So I think the changes I have seen, I think a bit more people are a bit more conscious towards their health. Now they understand what is a respiratory system most of the time. And, they're good with, I mean, a better understanding of air pollution, communicable diseases, and all these things which are spreadable. So yes, I think this is the change I have seen. Advice, I think proper sanitization of hands, face mask. Whenever you go in public, don't touch all the things. Even you're traveling, train, metro, public transport, whatsoever it is. You have to be conscious about what you're touching and what you're eating. So yes, पहले से थोड़ा improve हुआ है लोगों का इस बारे में सोचने and I think it's good. Yeah, that's a valuable advice, Dr. Thank you so much. Dr. Sudeep, you want to add on something on this? Some new things which you want to add on? सर एक तो फर्स्ट एक्सरसाइज करना चाहिए सबको, उसकी बॉडी इम्यूनिटी सही रहे, है ना। सेकेंड Okay. है जो भी डॉक्टर रोहित ने बोला कि हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बट अभी है ना कि अभी लोगों को ये भी है कि लोग बोले ठीक है जब कोविड हो तो देखा जाएगा, मतलब अभी थोड़ा सा ऐसे ही क्योंकि अभी वैक्सीनेशन भी आ गए, है ना। तो ये सभी से माइंड गेम ही है कि आपको ठीक होना चाहिए, ठीक रहना चाहिए। Correct. That's great. Thank you so much, Dr. Sudeep. Sudeep, Doctor, you says that like we have to do the exercise. So there is one another question from exercise only, and you have to answer this question first. So the question is like, hello doctors. Oh my God, this is there's someone Rahul Gupta. Hello doctors, I am working person. I didn't get too much of time to do the exercise. So what do you advise me how to keep myself healthy? That's a very good question. I think this is one of the most common questions for every working person right now. I, Because the sorry to people are interrupt. working. Yeah, yeah, Sorry yeah, to Dr. interrupt Devanshan. in this, but I like to tell you one thing, okay here. So मैंने किसी बहुत अच्छे इंसान से सुना है कि जो शरीर आपका 24 घंटे साथ दे रहा है, क्या उसको आप 2 घंटे नहीं दे सकते हो? डोंट टेल मी दिस एक्सक्यूज। जो शरीर आपको 24/7 साथ देता है, उसको आप 2 घंटे टाइम नहीं दे सकते। बिल्कुल दे तब सकते हो। दो यू दो कैन। घंटे की भी जरूरत नहीं है, 30 मिनट बहुत है। या एग्जैक्टली। So what do you think? Like there are people who are going to office and they are working for almost 10 to 12 hours. So what you will my I will just rephrase this question in some of the other ways. Like what kind of exercise you will prefer them? You will tell them, okay, ये वाला exercise करने से ज़्यादा better रहेगा, so that they can keep themselves healthy. If they will do for 30 minutes also. So what are the kind of exercise? सर देखिए, फर्स्ट तो आप एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर सकते हो, हर एक जॉइंट स्ट्रेच कर सकते हो फर्स्ट। सेकेंड आप मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, चेस्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। ये तो 30 मिनट का बस है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये भी टाइम नहीं मिले तो फिर आप वॉक कर लो या जॉगिंग कर लो 15 मिनट। और अगर I ये would भी सब also कुछ like टाइम। to I'd also like to add जरूरी Yes, नहीं yes. है सिर्फ We'll एक्सरसाइज want के to फॉर्म hear में from you. एक्सरसाइज की जाए. I think engaging yourself in some sports would help definitely. Badminton, squash, well, A whatever lot, you like. a lot. That will Yes, be that's helpful very and good. funny. Yes, actually, like the people, most of the people I have seen, like in corporate world also, like they are very fond of playing cricket. तो हर weekend उनका एक book होता है, like they don't bother about the age, like 40-45 years के people मैंने देखे हैं लोगों को cricket खेलते हुए जाते हैं morning में. So I think that is also benefit for them at that point of time, right? और Engaging अगर exercise नहीं करेंगे तो of course you guys are there to help us. Like, that is why it is called prevention is better than cure. yourself. Yes. Engaging Okay. yourself in any kind of activities. It's any Right. form. Just do some physical activities. That's true. So we have one more question. Okay, this question is very interesting, but I think this question can be a bias also. So people are saying like Ayurvedic medicine or Western medicine, which one you guys will refer to the audience? So I don't think there is any Ayurvedic doctor sitting over here. No, but I would like to say something on this. See,
in respect to Ayurveda, Ayurveda is not actually a medicine or something like that. It is a lifestyle. Okay. And you cannot provide yourself with any acute emergencies in Ayurveda. Okay. True. So Correct. yes, if you are ready to adopt a new lifestyle, then you may switch to Ayurveda. Eat something healthy. Ayurveda is all about eating patterns. Okay. And if you have anything serious or acute or debilitating, you have no choice other than allow. That's a very valid point. I really have thanks to you, Dr. Ravi. That's very important, guys. Because if you are at the stage where because I will take times what we have heard and what we know about this, right? But if you are suffering from any crucial disease or something like that, you should go for a major doctor first. That's very good. Okay, so that question is uh, waste of time, because it answers to worry. Sir, मेरे पास भी एक question है. How can I ask? How to be happy and healthy after marriage? Any tips? Oh my God. You need to be like it's the I like to say you one thing, marriage is the most beautiful thing. You every coin has two point of view. You need to see it properly, okay? And you will be happy. So see the positive side. I don't think that was you need to reply this question because this is not this is to answer the World Health Day. Okay, so this is what we have for today. Any closing statement from I want to hear from all three of you so that which can give good advice to the public. Starting from Dr. Rohit. Yeah, I would like to summarize as eat healthy, drink plenty of fluids, avoid junk, stay away from obesity. That's all. That's all it needs to be. Okay. Absolutely. So being a physio, exercise is must. Eat healthy and स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा. So much that's important. Dr. Devansha. I like to say everybody that it's difficult to be happy nowadays, but it's the best medicine ever. So on the World Health Day, I like to tell everybody keep yourselves healthy, happy, and live young, live happily. That's it. It is the most curable thing ever. So that's it. Okay. So, Dr. Devansha, these were the questions which we have. Hand it over to you. Okay, thank you. So, we extend our heartful gratitude to Dr. Rohit and Dr. Shubhadeep Day for your presence today. Your insights have been truly valuable, greatly appreciated. The session was undoubtedly enriching for our audience as well. Big thank you to all attendees and our esteemed speakers for dedicating your time to join us today. Wishing everyone a very happy Health Day. Stay healthy, stay fit. Thank you, everyone. Thank you, all the doctors here. And thank you, Indresh sir, you too. Thank you, Shivangi, you too. Thank you everyone for having me. Thank you. Thank you so much. Thank you.